And represents this party, Christine Gonzalez. How are we doing tonight? We feeling good? Yeah! That's right. It is such an honor to be here. My name is Christine Gonzalez, and I am the state senator for this district right here in Astoria. Woo! And I also represent Brooklyn and Manhattan. I'm sorry. And let me tell you, across the three boroughs, it is so clear that what we want and what we deserve is a Zahran administration. I am so proud to stand with the Democratic nominee the night before Election Day, because this is a critical moment. As someone who grew up right here in Queens in a one-bedroom apartment in a working-class family, I have seen it from day one that this city is too hard sometimes for our families and our working New Yorkers to afford. And in this moment, it's important because we have a chance to draw a line in the sand, to say that this is a city of workers, a city of people who believe and know that we can do better, to say that we reject a presidency that has cut off SNAP benefits for our own 2.9 million New Yorkers, to reject candidates that work with them when they kidnap people off of our streets, and instead to step up and stand up and say, we know we will win better with a Zahran administration. I have worked with our assembly member and who I know will be our future mayor, Zahran Mohammadani, in the assembly as the state senator, and every single day in front of the cameras and behind the scenes, he has worked tirelessly for every single thing he believes in. I've seen him go on hunger strikes. I've seen him do sleep-ins. I've seen him run miles for people like us. But tomorrow, people like us need to show up for him. And I want to say thank you to everyone who has shown up to this point, because this campaign has proven itself. Over 100,000 volunteers. Over this Sunday alone, 160,000 doors knocked. Yeah. And the most votes in a primary ever in New York City. It is clear that there is a movement behind this campaign, and we have to remember to show up tomorrow at the polls. So for every New Yorker who is at home, who has not yet voted, who has seen someone in their circle or experienced themselves the unaffordability of this city, please, I am asking you to show up, because I know we've won great things before, and I know we can elect Zahran Mohammadani to win great things. So with that, it is my immense honor to introduce my absolute incredible colleague and champion and fighter, Zahran Mohammadani. Thank you. Good evening, everyone. It is such a pleasure to be here with all of you today, to be here alongside our borough president, our deputy majority leader, our state senator, our city councilwoman, and countless volunteers who are here for the final night of canvassing before the election. We know what is on the ballot. But I want to take a moment to speak about who is on the ballot tonight. Donald Trump just put out a statement encouraging New Yorkers, saying they must vote for Andrew Cuomo. We know and have known for months that Donald Trump would favor Andrew Cuomo as the mayor. They share the same donors. They share the same small vision. They share the same sense of impunity. And yet in these final days, what was rumored, what was feared, has become naked and unabashed. The MAGA movement's embrace of Andrew Cuomo
is reflective of Donald Trump's understanding that this would be the best mayor for him. Not the best mayor for New York City, not the best mayor for New Yorkers, but the best mayor for Donald Trump as his administration. And for all those who question the feasibility of fighting for working people, we speak often about free buses, which costs about $700 million. I would invite you to look at another man who endorsed Andrew Cuomo today, Elon Musk. Elon Musk, for whom it only took $959 million in tax breaks from Andrew Cuomo when he was the governor for his pet projects to get that endorsement. Yep. More money than it would cost to make every single bus free in this city. So the question is not how we will pay for it, but whether we want to pay for it. Yes. And so we know, as you all go out tonight to knock on doors, that the New Yorkers you will find on the other side are New Yorkers who are increasingly feeling afraid of their own place in this city. New Yorkers who question whether they can send their children to school, whether they will be able to afford the next rent hike, whether they can actually get groceries with these snap cuts. New Yorkers who know that they are under attack from twin crises of an authoritarian administration on one side and the affordability crisis on the other. And as much focus as there is on polls and on predictions, I want you all to raise your hands for me one last time. If every person who is here to canvass can put their hands in the air, because these are the hands that will decide this election. These are the hands that will cast votes. These are the hands that will knock on doors. These are the hands that will call your neighbors. And these are the hands that have brought us to this point of making history in this city. Making history to show that when you focus and fight for working people, you can in fact remake the politics of the place that you call home. And I want to thank every person that's here, because though it is tempting in electoral politics to ascribe an achievement to an individual, it is actually of a collective. And you are all the people who made that collective real. You are the New Yorkers who were with me this morning at 6, and the New Yorkers who are with me this evening at 7. The New Yorkers who have been standing alongside this fight for more than a year. And the reason that the President of the United States of America, the reason that one of the wealthiest men in the world are both trying to get involved at the last minute is that they know we will accomplish everything we have run on. That is what they fear. They fear the power of an example that can show that it need not be this hard to call this city home. It need not be this hard to afford to live in these 5 boroughs. And I thank you because you are on the verge of sharing that example with the world. So hold on to that example tonight. Hold on to it when you're going 10 consecutive not homes in your canvas. Hold on when you're in that second hour and you're asking yourself, should I walk up this 6th flight of stairs? Hold on to it when a person opens their door just a little bit and they show you the despair that they have long associated with politics. Hold on to it because you could open their eyes to a world that they have not seen in this city for so long. And as tempting as it is to think that everyone has been paying attention to this race. Just last week, a friend of mine, Charlie, knocked on doors in Hell's Kitchen, and he shared afterwards that he met a man who had yet to hear of this campaign. Oh, boy. You may find a New Yorker for whom you are the person that introduces them to this fight. And that is why more important than me is you. You are the people who are bringing this fight to the doorsteps of New Yorkers. I will never be able to thank you enough for the privilege of being a part of this movement. And now, with close to just 24 hours until the polls close, let us leave everything out there on the field, my friends. Let us do it together. Let us work so hard this evening and tomorrow that we never have to ask ourselves the question, what if? Let that never be the words that leave our mouth, and let us instead breathe in the victory that each and every one of you have brought forth in this city. Thank you so much.
न्यूयॉर्क के इलाके क्वींस में ज़हरान मोहम्मदानी के हामियों की जानिब से कन्विंसिंग कैंपेन का सिलसिला जारी है और अब से कुछ देर पहले ज़हरान मोहम्मदानी ने गुफ्तगू भी की है और कन्विंसिंग का सिलसिला जारी है ख़ुद को वोट देने के लिए और साथ ही साथ उनके जो हामी हैं उनकी जानिब से भी ज़हरान मोहम्मदानी को वोट देने के हवाले से कन्विंसिंग की जा रही है। ताज़ा सर्विस के मुताबिक ज़हरान मोहम्मदानी को अपने हरीफ एंड्रयू कुओमो पर कुछ बरतरी हासिल है और अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो न्यूयॉर्क की तारीख के वो पहले मुसलमान मेयर बन जाएंगे। न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन कल होने जा रहा है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़हरान मोहम्मदानी न्यूयॉर्क में रैली से खिताब कर रहे थे। शहरियों से वोट की अपील की जा रही थी और साथ ही साथ उनके हामियों की वजह से भी कन्विंसिंग कैंपेन का सिलसिला जारी है। They mean to say is what they want. Jeremy, Assembly member, I know you just said that this is more naked in a vacuum for your work than previous associations. Were you at all surprised to see the president go this far in front of Governor Cuomo? And then also, how do you reckon? I know you've made your own pushes into voter areas. Associations. Were you at all surprised to see the president go this far in front of Governor Cuomo? And then also, how do you reckon? I know you've made your own pushes into voter bases that have supported Trump in 2020 or even earlier. So how do you reckon with your own appeals to Trump voters and Cuomo? you know, I will always speak to every New Yorker who calls the city home. And while I'm looking to speak to Donald Trump's voters, Andrew Cuomo is looking to speak to Donald Trump's donors. That's the difference here. These are New Yorkers who voted for the president in the hopes of having a lower cost of living and who instead found that their despair was exploited as a means by which to deliver the political prosecution of Donald Trump's enemies and the enacting of the single largest deportation force in American history. Now, we knew in the primary that Andrew Cuomo was being funded by the same billionaire donors that gave us Donald Trump's second term. I did not, however, anticipate Andrew Cuomo going from being Donald Trump's puppet to being so nakedly his parrot. What he has said in these last few days, these are words that should shock the conscience of New Yorkers. He has said that diversity is a weakness, while forgetting which black host of the TV show he was on he was actually speaking to. He has laughed and agreed when a radio show host said that I would cheer on another 9/11. He has stood alongside the current mayor of the city as that mayor said that he was endorsing Andrew Cuomo to stop a movement that was burning churches in Nigeria, to stop New York City from becoming Europe. And as Deputy Majority Leader Mike Gianaris said, for Andrew Cuomo's closing message to be a call for Republicans to support him, it shows what we have long known, but what he was able to hide while he was in Albany, which is that Andrew Cuomo is interested more in his own power than in living up to the ideals that make so many New Yorkers proud to be Democrats. All right, we're going to go Michael right here. Assemblyman, in his post, Donald Trump very specifically threatened to withhold federal funds, that it is highly unlikely that I will be contributing federal funds other than the very minimum to New York City. If you are elected, that is a very real threat that you're going to have to deal with. How will you address that after you're elected if you win? I will address that threat for what it is. It is a threat. It is not the law. And too often we treat everything that comes out of Donald Trump's mouth as if it is already legal just by virtue of who is saying it. And it is time to finally stand up to the bullies that make these threats, not to become the bullies ourselves. And we've seen time and time again that the best way to respond to Donald Trump and to defeat these kinds of threats is to actually stand up and fight back. You've seen leaders across this country who have shown their unwillingness to compromise on their own morals and their own values as the way in which they fight back. And too often what we found in New York City is instead a willingness to capitulate and coordinate. And all of this with the most collaborative mayor you could find for Donald Trump in New York City. Still, the Trump administration was detaining New Yorkers as young as 6. Still, the Trump administration was cutting funding from our schools. Still, the Trump administration was taking $80 million out of our city's budget, and still the Trump administration was threatening $18 billion in cuts for infrastructure projects. My point here is that even with that collaboration, the threats continue. And so it teaches us all that it's time to actually stand up
and name this authoritarian crisis for what it is, and to speak about this funding as not something that Donald Trump is giving us here in New York City. This is something that we are in fact owed in New York City. Thank you guys. न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन कल होगा और इस हवाले से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़हरान मोहम्मदानी न्यूयॉर्क में रैली से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और अभी आपको ये खबर, गार्डन पर हादसे के बाद डंपर को जलाया गया। डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद का बयान सामने आ गया है। इस वाक़े के हवाले से एसएसपी को फ़ोन करके उन्होंने कहा है कि पुलिस की ज़्यादा से ज़्यादा नफरी लेकर पहुँचें। हादसे में जिसका बच्चा जाँ बहक हुआ, मैं उसके गम में शरीक हूं और उसके घर और अस्पताल भी जाऊंगा। लियाकत महसूद ने कहा कि एसएचओ ने कहा कि आप आ जाएं, कानूनी कार्रवाई करूंगा। हम 15 से 20 अफराद हादसे के मकाम पर पहुंच गए और उन्होंने बताया कि वहां बहुत लोग मौजूद थे जिन्होंने मुझ पर कातिलाना हमला किया। एहतजाजन नेशनल हाईवे बंद कर देंगे। डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद का ये बयान सामने आया है, जो कि कुछ देर पहले गार्डन के इलाके में पहुंचे थे जहां पर ट्रैफिक हादसा हुआ। डंपर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक और उसकी अहलिया जख्मी हुई थी। वाक़े के बाद मुश्तइल शहरियों की जानिब से डंपर को आग लगा दी गई थी। डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद मौके पर पहुंचे तो लोगों की जानिब से उन पर पथराव किया गया और इस वाक़े के बाद ये देखा गया कि लियाकत महसूद के गार्ड की जानिब से फायरिंग की गई, हवाई फायरिंग की गई और इस तरह फायरिंग करते हुए वहां से रवाना हुए। उसके बाद डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एसएसपी को फ़ोन करके कहा था कि पुलिस की ज़्यादा से ज़्यादा नफरी लेकर मौके पर पहुंचें। हादसे में जिसका बच्चा जाँ बहक हुआ है, मैं उसके गम में शरीक हूँ, उसके घर और अस्पताल भी जाऊँगा। एसएचओ ने कहा कि आप आ जाएँ, कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम 15 से 20 अफराद हादसे के मकाम पर पहुँच गए, वहाँ बहुत लोग मौजूद थे। लियाकत महसूद ने दावा किया कि लोगों ने उन पर कातिलाना हमला किया। उन्होंने ये भी कहा है कि एहतजाजन नेशनल हाईवे बंद कर देंगे। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़। शाह आलम मार्केट वो जगह है जहाँ पर आपको कॉस्मेटिक की हर तरह का मटेरियल मिल जाएगा। सस्ता भी मिलेगा, महंगा भी मिलेगा, ओरिजिनल भी मिलेगा और उसकी कॉपी भी मिलेगी। और ख़वातीन की बड़ी तादाद आपको यहाँ पर कॉस्मेटिक की जितनी भी शॉप्स हैं वहाँ पर ज़्यादातर दिखाई देगी। अच्छा, ज़्यादातर चूँकि ये वाइटनिंग क्रीम के लिए आती हैं और यहाँ पर किस किस्म का मटेरियल मौजूद है, लोकल है या पाकिस्तानी है, या अगर हम बात करें कि इंपोर्टेड भी यहाँ पे या उसकी कॉपी भी मौजूद होती है, और जो ख़वातीन यहाँ पर आती हैं उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड क्या है। इस वक्त हमारे पास दुकानदार ही मौजूद है, उन्हीं से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कि उनके पास वाइटनिंग यानी रंग गोरा करने वाली कितनी क्रीमें मौजूद हैं, इसमें लोकल कितनी है और इम्पोर्टेड कितनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी दुकान हमने देखी, आधे से ज़्यादा तो रंग गोरा करने वाली क्रीमों से भरी हुई है और सीरम भी मौजूद है। तो बताएंगे सब पाकिस्तानी है कि कुछ बाहर से भी है? मोस्टली पाकिस्तानी वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं जो कि ज़्यादा चलती हैं। हमारे पास जो लेडीज़ आती हैं ना, उनकी डिमांड ज़्यादा होती है कि हमें 7 दिन में गोरा होना है। किसी की शादी है, किसी का मंगनी है, ऐसा होता है। तो उस लिहाज से पाकिस्तानी क्रीम उनको ज़्यादा सूट करती है। पाकिस्तानी क्रीम का रिज़ल्ट भी नो डाउट बहुत अच्छा है, इधर के वेदर के मुताबिक है, तो इसलिए पाकिस्तानी क्रीम यहाँ पे ज़्यादा चलती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी प्राइस मुनासिब होती है, ख़वातीन की रेंज में होती है और 70 to 80% आप समझते हैं कि क्रीम और सीरम वगैरह लेने आती हैं? जी 70 to 80% वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यहाँ पे क्रीम्स के अलावा स्किन पॉलिश, ब्लीच, रंग गोरा करने की जितनी प्रोडक्ट्स हैं ना, वो समझ लें कि पेस्ट्री हैं हमारी ख़वातीन के लिए। तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं पाकिस्तानी कंपनी की ओरिजिनल बिकती हैं। और काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो यहाँ पे कॉपी भी बिकती हैं, बहुत से हैं, लेकिन मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे पास प्रोडक्ट्स ओरिजिनल है।
इनकी प्राइस कम होती है जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स होती हैं, और अब मुझे बताएं कि लाहौर में तैयार होती हैं या किसी और शहर से भी तैयार होकर आती हैं? जी, कुछ स्पेसिफिक क्रीमें हैं जो लाहौर में भी तैयार होती हैं। इसके अलावा झेलम है, गुजरात है, गुजरांवाला है। मैं किसी कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा। मुख्तलिफ शहरों में इनकी आउटलेट्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इनके मालिकान हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और नो डाउट इनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं और मुनासिब रेट में आपको ये यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। जी बिल्कुल, उसके रेट मुनासिब हैं, इसी वजह से ये क्रीमें जो हैं, सीरम जो हैं, यहाँ पर आसानी से दस्तयाब होते हैं। और दूसरा ये कि लाहौर, गुजरांवाला, झेलम, उकाड़ा, जहाँ भी चले जाएँ आपको आसानी से ये पाकिस्तान के अंदर तैयार होने वाली क्रीमें मिल जाती हैं। एक और दुकानदार से भी जान लेते हैं कि इनके पास किस किस्म के प्रोडक्ट्स हैं और ख़वातीन कितनी ज़्यादा उनसे डिमांड करती हैं। आप बताएं, आपके पास किस किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, लोकल हैं या इम्पोर्टेड हैं? हमारे पास दोनों हैं। डिमांड ख़वातीन लोकल करती हैं या इम्पोर्टेड करती हैं? असल में वो डिमांड तो वो इम्पोर्टेड की करती हैं, लेकिन जब वो प्राइस सुनती हैं वो फिर कहती हैं हमें लोकल ही दे दें। अच्छा, ये ख़वातीन जो आती हैं सिर्फ मेकअप, मैं तो समझती थी कि सिर्फ मेकअप के लिए शाला मार्केट आती होंगी, कि क्रीमों के लिए ज़्यादा आती हैं, यानी कि रंग गोरा करने वाली क्रीमों के लिए? नहीं, हमारे पास यहाँ पर पार्लर्स कस्टमर है ज़्यादा ना, तो पार्लर से रिलेटेड हमारे पास कस्टमर आता है, यानी कि फेशियल वगैरह, स्किन पॉलिश, इस तरह की चीज़ें लेने आती हैं। आपके पास कभी ख़वातीन ऐसी आई हैं कि इस क्रीम को यूज़ करने के बाद उनका स्किन ख़राब हो गई है या उन्हें कोई मसला हुआ है? नहीं, ऐसी तो कोई भी नहीं है। आपको इससे लगता है कि ये क्रीमें इतनी इफेक्टिव होती है कि रंग गोरा हो जाता है? कभी आपने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया? नहीं, हमने नहीं किया, लेकिन ये इनको इस्तेमाल करते रहो तो ठीक रहता है, स्किन सही रहती है। जैसे ही छोड़ोगे तो फिर कलर वैसे ही हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की बात सुनी कि यहाँ शाला मार्केट में इम्पोर्टेड भी है, लोकल भी है और कॉपी भी मिल जाती है, लेकिन ख़वातीन प्राइस को देखते हुए वही ज़्यादातर उनसे डिमांड करती हैं, और ख़वातीन जब तक वो क्रीमें इस्तेमाल करती रहती हैं तब तक वो गोरी रहती हैं। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ख़वातीन में हमारे माशरे की जानिब से, सोशल मीडिया की जानिब से, जब वो ख़वातीन को खूबसूरत और रंग गोरा देखती हैं और लोगों की तवज्जो उनकी तरफ ज़्यादा मबजूल होती भी देखती हैं, तो उसकी वजह से उनके अंदर भी ये जहन में आती है बात कि उनका रंग भी गोरा होना चाहिए। यही वजह है कि वो 7 दिन में गोरा होने के लिए ऐसे क्रीमों का इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे उनकी स्किन ख़राब हो जाती है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अभी तक ऐसे कॉस्मेटिक जो इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी क्रीमें हैं जो लोकल बनती हैं जिसमें स्टीरॉइड्स बहुत ज़्यादा है, उस पर अभी तक कोई लॉ या एक्ट नहीं बना। अगर लॉ और एक्ट बना हो, इसको बनाने वाले, उसको बेचने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, तो शायद ख़वातीन भी इन अद्वियात का, इन क्रीम का और इन सीरम का इस्तेमाल छोड़ दें। शाला मार्केट में आपने देखा कि जिस तरह से लोकल प्रोडक्ट्स और इसके साथ साथ जो इंपोर्टेड की कॉपीज़ हैं और जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें और सीरम है आसानी से दस्तयाब है, और जो कम कीमत वाली ये जो क्रीमें हैं और इसके साथ सीरम है, ख़वातीन की बड़ी तादाद 70 से 80% वहाँ जाके वो परचेज़ करती हैं। इसके अलावा रंग गोरा करने के लिए ख़वातीन की बड़ी तादाद एस्थेटिक क्लिनिक की तरफ भी जाती है, और एस्थेटिक क्लिनिक में क्या रंग गोरा करने वाली ड्रिप्स मिलती हैं और ड्रिप्स लगाने से क्या वाकई रंग गोरा हो जाता है? इस हवाले से आपको एस्थेटिक क्लिनिक में लेके चलते हैं और डॉक्टर से बात भी करते हैं और जानते भी हैं क्या ये ड्रिप्स इतनी मौसर होती हैं कि रंग गोरा हो जाता है। एस्थेटिक क्लिनिक में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और डॉक्टर अरीबा हमारे साथ हैं। वो इस वक्त हाइड्रा फेशियल भी कर रही हैं। डॉक्टर अरीबा से सबसे पहले, जो कि डर्माटोलॉजिस्ट हैं, उनसे हम ये जानते हैं कि उनके पास जो ख़वातीन आती हैं रंग गोरा करने वाली ड्रिप्स के बारे में और बाकी रंग को कैसे गोरा किया जा सकता है, वो इनसे क्या पूछती हैं और कितनी ख़वातीन इनके पास आती हैं। अरीबा, आप अभी हाइड्रा फेशियल भी कर रही हैं, तो जब ख़वातीन आती हैं वो आपको कितना, यानी मुझे अगर मैं जानना चाहती हूँ कि डेली की अगर 10 भी आपके पास ऐसी ख़वातीन आती हैं तो उसमें वाइटनिंग ड्रिप वाली जो इससे रंग गोरा होगा वो कितनी डिमांड होती है? उसकी डिमांड आजकल आपको जैसे पता है, थोड़ा लोगों को नॉलेज आ गई है, लोगों को हाउ नो है इन चीज़ों के बारे में, तो वो ना लोग ज़्यादातर वाइटनिंग की तरफ नहीं जाते, वो ग्लास स्किन के बारे में जाते हैं कि हमारी स्किन नीट हो, साफ़ हो, कोई पिंपल वगैरह ना हो, कोई पिगमेंटेशन, एक्नी वगैरह ऐसा तो कुछ ना हो। वैसे बहुत सारी आती हैं जो इसके रिलेटेड कंसर्न होती हैं कि हमारा रंग गोरा कैसे होगा, साफ़ कैसे होगा, तो हम उनको तो बेसिकली हम लोग कोई स्टीरॉइड्स वगैरह उसकी तरफ तो एज अ डर्माटोलॉजिस्ट मैं कभी भी अपने क्लाइंट्स को नहीं भेजती। तो हम उनको बोलते हैं कि आप अपनी स्किन का ख्याल रखें, आप सीरम्स वगैरह होते हैं या कोई एस्थेटिक के प्रोसीजर्स होते हैं जिसकी तरफ हम उनको लगाते हैं, जैसे हाइड्रा आ जाता है और डिफरेंट कार्बन लेज़र आ जाती है, माइक्रो नीडलिंग PRP आ जाती है, जो आपका स्किन टेक्सचर बेहतर करते हैं, तो उनकी तरफ हम ज़्यादा उनको करते हैं कि आप ये वाले प्रोसीजर्स लें।
अच्छा, आप तो एक ज़ाहिर डॉक्टर हैं, आपके पास डिग्री है, लेकिन लाहौर में हमने बहुत से ऐसे डर्माटोलॉजिस्ट देखे हैं जो कि यानी डर्माटोलॉजिस्ट भी नहीं हैं, लेकिन वो स्टैटिक क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं। तो उनकी जो मुतासरा है, उनके पास से जो मुतासरा ख़वातीन आपके पास आती हैं, उनकी स्किन की क्या सूरत हाल होती है? ऐसे बहुत सारे क्लिनिक्स होंगे जहाँ पे आपने देखा होगा कि सिर्फ वो उन्होंने ना वो रखे टेक्नीशियंस रखे हुए हैं, वो प्रॉपर डॉक्टर नहीं है ना, वहाँ पे कोई कॉस्मेटोलॉजिस्ट बैठता है, तो उनको स्किन का इतना ज़्यादा हाव-नो नहीं होता, तो वो क्लाइंट की स्किन को ख़राब करके बंद करके या उनको पिगमेंटेशन आ जाती है और उनको आफ्टर केयर भी नहीं बताते। हम जब एक ट्रीटमेंट करते हैं तो क्लाइंट को बताना पड़ता है कि आपने इसकी आफ्टर केयर करनी है, क्योंकि जब तक आप आफ्टर केयर नहीं करते स्किन की तो उस ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे हम एशियन है, हमारा सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, अगर हम ऐसे ही बगैर सन ब्लॉक लगाए, बगैर कोई टेक केयर किए बाहर निकल जाएंगे तो पिगमेंटेशन और ज़्यादा हो जाएगी। मिलाजमा जैसे PRP के माइक्रो नीडलिंग के वो होते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, आपकी जो ऊपर वाली स्किन है उसको डेड करते हैं, नीडल्स उसमें डालते हैं ताकि जो सीरम्स वगैरह हैं, आपका प्लाज्मा है, वो इजीली अंदर जाके अपना काम कर सके। तो जब आपकी स्किन इस तरह होती है तो हम क्लाइंट को ये रिकमेंड करते हैं कि ना आपने, जैसे बहुत ज़्यादा फीमेल्स होती हैं कि ना आपने चूल्हे के सामने जाना है, ना आपने सन एक्सपोजर अपना ज़्यादा करना है, और अगर इन केस अगर आपने जाना भी है तो आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने एक अच्छी क्वांटिटी ऑफ सन ब्लॉक, अच्छा सन ब्लॉक लगाया हो, ताकि आपको जो है ये ट्रीटमेंट आपका काम करे और आपको सही से इसके रिज़ल्ट मिले। अरीबा, ये बताओ कि ये जो ड्रिप्स लगाई जाती हैं रंग गोरा करने वाली, क्या वाकई इससे रंग गोरा होता है या वक्ती तौर पे रंग सफ़ेद हो जाता है? नहीं, बेसिकली हम ग्लूटाथायोन ये हम यूज़ करते हैं। ग्लूटाथायोन का लोगों को बहुत एक मिसकंसेप्शन है कि ग्लूटाथायोन का साइड इफ़ेक्ट है। ग्लूटाथायोन का साइड इफ़ेक्ट ही वाइटनिंग है। बेसिकली ये आपके मसल्स के लिए अच्छा होता है, आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो वाइटनिंग है, और ये नहीं होता कि एकदम प्लास्टिक सर्जरी हो जाए, मैजिक हो जाए कि बिल्कुल फेरी टेल, ऐसा नहीं होता। सिर्फ 1 या 2 टोन जो है वो आपका कलर लाइट होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, चाहे आपने 6 इंजेक्शंस लिए, 8 लिए, 12 लिए। और दूसरा ये कि आपकी स्किन साफ़ हो जाती है, क्लियर हो जाती है। आप वैसे ख़वातीन को मशवरा देती हैं कि आपने रंग बेहतर करना है तो आप ये वाइटनिंग वाली ड्रिप्स लगा लें, रंग गोरा करने वाली जो ड्रिप्स हैं वो लगवा लें? जो बहुत ज़्यादा अपनी स्किन से कंसर्न होती हैं ना कि नहीं हमारी शादी, जैसे आजकल आपको पता है शादी सीज़न चल रहा है, तो बहुत सारी ब्राइड्स आती हैं, वो कहती हैं कि जी हमारा रंग साफ़ हो, ग्लास स्किन हो, तो उनको हम चलो कहते हैं कि चलें आप कर लें। लेकिन वैसे जो एक नॉर्मल, आपको पता है यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है, उसको तो मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करती। मैं उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, जैसे आप हाइड्रा ले लें, आपकी स्किन साफ़ हो जाती है। और आपको पता है कि अल्लाह ने वैसे ही हमारी जितनी भी ये चीज़ें बनाई हैं, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे हमारे लिए रखा है। अगर हम उनको खाएं, अगर हम उनको अपनी स्किन पे लगाएं तो वैसे ही हमारा रंग साफ़ सुथरा हो जाता है। जैसे एक आलू है, आलू में अल्लाह ने इतने इंजाइम्स वगैरह रखे हैं कि वो आपकी किसी भी स्कार्स को, पिगमेंटेशन वगैरह को ट्रीट कर सकता है। बीटरूट है जो हम अपनी बॉडी की डिटॉक्सीफाई के लिए यूज़ करते हैं, वो इतना अच्छा है, वो आपकी स्किन पे इतना अच्छा रिजल्ट देता है। तो मैं उनको कहती हूँ कि आप अपनी डाइट अच्छी करें, क्योंकि आपकी स्किन भी आपकी डाइट से रिलेटेड होती है। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप एस्थेटिक के जितने मर्जी ट्रीटमेंट करवा लें, आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा। वो होगा महीना होगा, 2 महीना होगा, फिर वैसे ही आपकी स्किन वैसे ही होने लग जाएगी। तो ये होता है कि आपको अपनी केयर खुद करनी पड़ती है, अपने आप को टाइम देना पड़ता है ताकि आपकी स्किन भी अच्छी लगे। ख़वातीन में रंग गोरा करने का इतना ज़्यादा